हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिव्या चैनल। एक बार फिर से दिव्या की किचन में आपका स्वागत है और मैं न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता विद कीमा। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप पास्ता। मैंने पास्ता को बॉईल कर रखा है। 200 ग्राम कीमा लिया है, चिकन कीमा। 2 टेबल स्पून में ऑलिव ऑयल लूँगी। मैंने 3 टोमेटो लिया है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर रखा है। मैंने टोमेटो को पहले 3 से 4 मिनट बॉईल कर किया था और उसका स्किन निकाल दिया है और इसलिए फाइनली इसको चॉप कर रखा है। मीडियम ऑनियन ले रही हूँ, इसको भी फाइनली चॉप कर रखा है। 6 से 7 गार्लिक ले रही हूँ, इसको भी फाइनली चॉप कर रखा है। चिली फ्लेक्स ले रही हूँ, ड्राई बेसिल ले रही हूँ और ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट। अब हम इसको बनाते हैं। ऑयल ऐड करते हैं। गार्लिक ऐड कर रही हूँ। इसको 20 से 30 सेकंड सॉटे कर लेते हैं। फिर हम ऐड करेंगे ऑनियन। ऑनियन को भी लाइट कुक कर लेते हैं। ऑनियन भी लाइट कुक हो गया है। हम ऐड करेंगे टोमेटो। और सॉल्ट। टोमेटो भी थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे कीमा। चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास टमाटो कैन वाला है तो आप कैन वाला टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर करके कीमा को कुक होने देते हैं। जो है कुक हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ शुगर, ब्लैक पेपर, बेसिल, ऐड करके पास्ता। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया। देख सकते हैं अपना पास्ता बन के रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं।
कीमा पास्ता बन के रेडी है और मैंने इसको इस बोल पे सर्व किया है। बहुत इजी रेसिपी है ये, बहुत हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें आने वाली न्यू वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।